See, non-operating expenses are to be added because originally they were deducted, and non-operating incomes because they are added. See, 5 lakhs में ये 2 lakhs क्या हुआ है? Add हुआ है. But I don't want this now anymore. I will have to take out this 2 lakhs. To take this 2 lakhs out, I will deduct it. So non-operating expenses will be deducted. See, less non-operating expense. Incomes. Non-operating incomes. Incomes में incomes add हो जाती हैं. But now I don't want one income which is non-operating income. That is a particular income which I don't want. Therefore, I will take it out. To take this income out, I will deduct it. Is it now clear? Yes, ma'am. Okay, that Yes, was ma'am. that Yes, was just an example. ma'am. But but what I want to show you is this. See what it is written here: add all non-cash and non-trade expenses. Means whether it is non-cash expense or it is non-trade expense. This is expense only, no? So expense has to be added, whether it is non-cash or non-trade. Next, second, deduct all non-trade incomes, non-operating incomes. So what you have to do with non-operating incomes? Less. Less means deduct. Only two rules. Only two things and two rules: non-cash and non-trade. Non-cash expenses, add in. Non-cash non-trade expenses, add in. You don't have non-cash incomes. You have only non-operating incomes, and that has to be deducted. So is the point clear now? Everyone? Is this point clear now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah, I have given examples also for your better understanding. See, non-cash expenses includes depreciation, transfer to general reserve, proposed dividend, etc. Non-trade expenses include loss on sale of machinery, building, loss on sale of building, loss on sale of furniture, investments, penalties. You pay penalties, no? Non-parking में गाड़ी खड़ी कर देना, and then you pay penalty. Okay? Business में आपने कोई गड़बड़ कर दी, तो पेनल्टी पे करनी पड़ती है ना, बिजनेस के रूल्स को ऑफेंस करने के लिए. सो पेनल्टी थोड़ी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ओके. नॉन ट्रेड इनकम्स, नॉन ट्रेड मींस नॉन ऑपरेटिंग. नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन कौन से होते हैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ओके, दीज आर माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. Okay, is it clear? This first part is clear. Treat all non-cash and non-trade. Yes, ma'am. Now next, Yes, ma'am. adjustment of working capital. Now you need to adjust the working capital. Always remember two things. Again, two rules. Here also two rules: add and less. Incomes to be deducted, expenses to be added. Here also two rules. What two rules are there? Cash has inverse relationship. Inverse means opposite. Opposite relationship with current assets, and cash has direct relationship with relation with current liabilities. Cash has inverse relation with current assets, and cash has direct relation with current liabilities. Now what do you mean by inverse? Inverse means opposite. And what do you mean by direct? Direct means same relation. Now consider this once again. Yeah. See, I have given non-cash expenses list here also. These are non-cash expenses just for your reference: depreciation, goodwill written off, patents written off, provision for income tax. Provision means yet it is a provision. We have not paid tax. It is a provision for income tax. Reserve for bad dates. It is RDD. It is not bad dates. It is reserve for bad dates. Reserve means we are thinking, we have a doubt that this amount of the certain amount of money will not be recovered from the debtor.
We are thinking, we have a doubt about that, but it is not sure, na? Yet it is shown on the debit side, RDD. It is not an expense actually. Abhi hua nahi hai, it has not been incurred. It will incur in the future, but it is presently shown in the P&L account on the debit side. Therefore, it is non-cash expense. RDD, transfer to reserve, proposed dividend, etc. Now, adjustment of working capital. Now, look at this example very carefully. Now, suppose you have debtors, cash, creditors, and then these are the examples, debtors and creditors. Suppose let's take debtors first. Debtors in 2010, 10,000, and in 2011, 5,000. Suppose. Okay, example. So 2 years are there, 2010 and 11. Now tell me, debtors were 10,000 and then it became 5,000. Are debtor increasing or decreasing? Are these debtors increasing or decreasing? Decreasing. Decreasing. Very good. Decreasing. Always remember, cash has an inverse relationship with current assets. Cash has inverse relationship with the current assets. Look at this point, the highlighted one. Ulta, opposite relation. If the current assets are decreasing, cash will increase. That means you have to add. And if the current assets are increasing, cash will decrease. And therefore, you have to deduct. Is the point clear? Is the point clear? Yeah. What is the Yes, logic ma'am. behind that, ma'am? What is the logic behind that? Somebody will answer me? Okay, I will explain you. Suppose you are my debtor. In 2010, you purchased goods from me worth rupees 10,000. But now in 2011, you as a debtor in my account reflects 5,000 rupees. That means it is understood that you must have paid me 5,000 cash. Earlier, the balance of debtor's account was 10,000. Now it is 5,000. It simply means that you must have paid me 5,000 rupees. Therefore, your balance has been decreased, and it is shown only 5,000 now. Is it now clear? Is it now clear? Yes, ma'am. Yes. आप मेरे डेटर थे 10,000 के. अब आपको 2011 में आपको कितना दिख रहा है? 5,000 रुपीज दिख रहे हैं. तो 10 में से 5,000 तभी दिख रहा है ना, क्योंकि आपने मुझे पे कर लिया होगा Ma'am, 5,000 रुपए. 5,000 paid. हाँ, डेटर ने मुझे पे कर लिया, तो मेरे पास कैश आ गई. देखो, डेटर कम हो गया, डेटर इज डिक्रीजिंग, बट कैश हैज इंक्रीज्ड. नो, मेरे कैश बॉक्स में पहले 10,000 रुपए थे, अब 15 हो जाएंगे ना, क्योंकि 5,000 आपने मुझे दे दिया. अभी समझा? Yes, ma'am. हाँ, डेटर पहले 10 का था, अभी 5 का हो गया. मतलब इसका मतलब एक ही हो सकता है कि डेटर ने आपको पेमेंट कर दिया. अच्छा, डेटर ने पेमेंट कर दिया तभी डेटर कम हो गया. डेटर का लाइबिलिटी बैलेंस कम हो गया. अच्छा, डेटर डिक्रीजिंग, तो कॉमन सेंस से कैश इंक्रीजिंग ना. How cash will increase? Because debtor has given me the cash of rupees 5,000. So earlier मेरे कैश बॉक्स में 10,000 थे. अगर डेटर मुझे 5,000 दे देगा तो 15,000 हो जाएगा. It will become 15,000. Cash will increase. So it has an inverse relation. No, see, debtor decreasing, cash increasing. Stock increasing, cash decreasing. Any current asset, I am giving you current asset example of debtors. I am giving you debtors ka example out of the current assets. You take any current asset, no, stock. Now suppose say closing stock. Closing stock will increase, cash will decrease, because it has an inverse relationship. How cash will decrease, ma'am, if stock is increasing? Common sense. How stock will increase? If you will purchase the stock. Yes or no? If you will purchase the stock, stock will increase, no? Yes or no? Yes. So once the stock is increased, that means it is understood that you have purchased the stock.
Stock purchased, stock will increase. Now common sense, stock is purchased. That means you have to pay the cash to somebody from whom you have purchased the stock. So you have to pay the cash. Cash goes out. While you purchase, cash goes out. So cash decreases. Stock increase, cash decrease. Debtor increase, cash decrease. Debtor decrease, cash increase. Ulta, opposite relation. Did you get that? Yes, ma'am. Okay, very good. So you have to understand with the logics. You don't have to cram. Okay, next. Cash has direct relationship with the liabilities. Direct, same. If current liabilities decreases, cash will also decrease. If the current liabilities increases, cash will also increase. Ma'am, give me the example. Yes, I will give you the example. Creditors. Now take one example of credit liabilities, current liabilities. Current liabilities are so many: creditors, tax, okay, outstanding liabilities, wages, outstanding expenses, and proposed dividend. There are so many current liabilities. Okay, I'm just giving you example of one. Okay, creditors. Suppose who are the creditors? To whom we have to pay. To whom we have to pay. Suppose 5,000 creditors were there earlier. Now it has become 10,000. Creditors increased. Creditors increased. That means 5 out of 5,000, earlier 5,000 creditors were there, but now 10,000 creditors are there. Are you getting my example? That means Yes, ma'am. earlier creditors were of 5,000. I had to pay them 5,000. I did not pay them 5,000. Instead, I asked them to send me more goods of rupees 5,000. So 5 plus 5, 10. That means creditors increased. See, my cash does not see, cash has no effect. I did not pay to them. No, cash earlier was 40,000. Now also 40,000. No effect to cash. That means cash is not paid to them. Actually, I had to pay them 5,000. No, but I did not pay to them. I said, please send me more goods of rupees 5,000. I will pay you all together later in the future date. So I did not pay them cash. I did not pay them cash means cash is not deducted. Cash is not deducted means it is increased. So cash is same. It is not deducted. It is not declined. Do you get my example? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So whenever any current liability increase, cash will also increase. Because cash is increasing, you will have to add. You will have to add it. Okay. If current liabilities is decreasing, current liabilities are decreasing, cash will also decrease. Because cash is decreasing, therefore you will deduct it. You will show less. Is it clear now? Yes, ma'am. Two concepts of non-trade and non-cash, and two concepts of working capital. Okay. So this is how things will be added and deducted here, and things will be added and deducted here. So you will see after addition and deduction. This is my net profit. This is add non-cash and non-trade item. These are my working capitals, the amounts of working capital. So finally, if net profit, this is net profit, this is final amount of this column, and this is final amount of that column, working capital column. So we will generate or use the cash from operating activity. We will either get the answer which we will get. The answer which we will get will be of two options. Either it will generate the cash or it will be used from the operating activity. Now, what do you mean by generate? Generate means the amount will be shown in positive, in the positive manner. Suppose it is 80,000, this is 20,000, and this is 10,000. So 80 plus 20, 1 lakh, 1 lakh plus 10, 1 lakh 10. So it is common sense. It is plus
1 lakh. So whenever it is plus 1 lakh, that means cash is increased. Whenever cash is increased, therefore it is referred to as cash generated. But when the amount will come in minus, negative amount will appear, then you will say cash used from operating activity. That means expenses are more than incomes. Liabilities are more than my assets. Do you understand this much? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. And now the last part of operating, I'm standing still at operating expenses, first activity. Still financing and investing activity is pending. Okay. So we have tax paid here. Last thing that is to be done here in the operating activity is less tax paid. Now, suppose this is the amount that you have generated from your operating activity. Operating means business related to the business. Now, suppose you have generated a profit of 2 lakhs. So you will have to pay tax, no? From the profits only we pay tax, no? Therefore, tax paid has to be deducted. Why to be deducted? Because cash goes out. We have to think only and only and only about cash. If cash comes in, then plus. If cash goes out, then minus. Cash inflow, cash outflow. Is this the simple format? Is this the simple one? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. I will repeat once again. If cash comes in, then plus. If cash goes out, then minus. So here cash paid is going out. Cash is paid to the government. So cash goes out from the business. When cash goes out from the business, it is to be deducted. Simple. So cash paid is deducted. Is it now clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure, everybody? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So Yes, cash ma'am. paid will be deducted from cash generated from operating activity. And last, what we are left with? Net cash. That means cash generated में से आप tax less करेंगे तो आपको मिलेगा net cash generated. Cash generated में से less tax paid करेंगे तो आपको मिलेगा net cash generated or used. जो भी आंसर मिला, पॉजिटिव मिलेगा तो जनरेटेड, नेगेटिव मिलेगा तो यूज्ड. दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिखने का. ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अब ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल आंसर है ना, ये नेट कैश, ये देखो यहाँ पे नेट कैश, उसको यहाँ पे लेके आने का, ये दूसरा फॉर्मेट. इस फॉर्मेट का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसमें सब कुछ एक साथ दिखेगा आपको. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड द कंप्लीट आंसर, क्लोजिंग कैश बैलेंस बाय आफ्टर एडिंग ओपनिंग कैश बैलेंस. दिस इज द वन फॉर्मेट. विद बड़ा वाला जो कंप्लीट मेन फॉर्मेट बोलते हैं ना, जिसको मेन फॉर्मेट, वो ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट. और ये एक साथ है. हाँ, ये कंटिन्यूड है. मतलब एक पेज पे मेरा इनफ नहीं हो रहा था तो मैंने दूसरे पेज पे कंटिन्यू किया. तो अब बहुत सिंपल है. पहले तो आपने ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बना लिया, उसमें से जो आंसर आया ना उसको इधर लेके आने का. ये देखो, फर्स्ट नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आउटर कॉलम फाइनल आंसर. कहाँ से आएगा ये फाइनल आंसर? स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्टेटमेंट नंबर 2. एक्चुअली हम बनाते पहले ये हैं फर्स्ट पेज पे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये बनाते हैं. आया समझ में कैसे बनाना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3 कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट. और कैश फ्लो स्टेटमेंट के भी 3 ही कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट. ओके. सो फर्स्ट क्या होता है? नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ये हम स्टेटमेंट नंबर 1 से लेकर आएंगे. अब शुरू करेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. उसके नीचे लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम इसके लिए अलग, जैसे ऑपरेटिंग के लिए हमने अलग से स्टेटमेंट बनाया था, तो इसके लिए अलग से स्टेटमेंट नहीं बनाना है. बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड. तो जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, इसलिए इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है. इसके लिए हम एक अलग फॉर्मेट बनाते हैं. ओके. इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं,
तो इसके लिए हम इसी फॉर्मेट में इसको बीच में दिखा देंगे. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अभी हम ये फॉर्मेट सिर्फ समझ के लेते हैं, फिर कल हम थोड़ा और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे. सिर्फ ये फॉर्मेट आज का दिन कर लें, फिर हम कल से प्रैक्टिकल सम्स शुरू करेंगे फॉर्मेट को रिवाइज करके. सिंपल है, डोंट वरी. कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अब मैंने आपको पहले ही बताया था, बिजनेस में अगर आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, बेचते हो, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होता है, क्योंकि आप बिजनेस को दे रहे हो ना. फिक्स्ड एसेट्स खरीद कर आप बिजनेस में डाल रहे हो, तो ये इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ, और क्या हुआ. आया नहीं? Ma'am. Yes, ma'am. अगर आप Yes, ma'am. डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज खरीद रहे हो किसी और कंपनी की, गवर्नमेंट की, तो भी इन्वेस्टमेंट हुआ. मतलब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दो तरीके की होती है, एक फिक्स्ड एसेट्स में और एक सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह. हाँ, एक और होता है, जब आप किसी को लोन देते हो, आपकी कंपनी ने लोन लिया, तो वो नीचे बोरोड फंड्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. लेकिन अगर आपने किसी को लोन दिया, आपने किसी को लोन दिया, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती. इन्वेस्ट किया ना आपने कहीं पे, क्योंकि आपको लोन के साथ इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना. नहीं समझा? No, समझा ma'am. मैम. ठीक है ना. चलो अभी आगे देखो क्या क्या है इसमें. देखो अब यहाँ पे ना क्या रूल क्या लगेगा, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या रूल लग रहा था, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ ऑल नॉन कैश एंड नॉन ट्रेड में क्या रूल था, एड ऑल नॉन ट्रेड एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस होगा तो ऐड करना है, इनकम होगा तो लेस करना है. ये रूल यहाँ पे लग रहा था. वर्किंग कैपिटल का रूल क्या था, करंट एसेट्स एंड कैश का ऑपोजिट रिलेशन होता है, करंट लायबिलिटीज और कैश का डायरेक्ट रिलेशन होता है. ठीक है. तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या रूल है, सेम रूल. इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग हैज सेम रूल. टू रूल्स. व्हाट टू रूल्स? If cash comes in, you have to add. If cash goes out, you have to deduct. Very simple. Is there any confusion? Is there any confusion? No, No, ma'am. ma'am. Sure. Yes, ma'am. Okay. So see now, add all sales of investment. Now, whenever you sell, what sales? Sales of investment, sales of fixed assets, sales of furniture, land and building, plant and machinery, whatever you sell. After selling the fixed asset or investment, cash comes in. Whenever cash comes in, cash inflow. Whenever there is cash inflow, you have to add. That's what I have written here. Add all sales of whatever and whenever you will sell, you have to add it. Okay. See now, add all sales of investment, fixed assets, etc. Whenever you will sell, you will add them. Add all the transactions whenever there is a sales. Okay. Because it is cash inflow. The logic is cash inflow. Cash comes in. When cash comes in, cash will increase. Cash will increase. Therefore, you have to add it. Now, whenever you will purchase of investment, purchase of fixed assets, purchase of land and building, plant and machinery, furniture, computers, vehicle, whenever you purchase anything for the business, it is investing. You are investing in your business, okay? But what happens with the cash? You have to think about cash. Okay, if you are purchasing furniture, computer, plant and machinery, that comes in. I know furniture purchase, furniture comes in, but you don't have to think about furniture which is coming in your business. After purchasing the furniture, what happened with cash? Goes out. Goes out. Very good. So this is chapter of cash flow statement. Therefore, you have to think about cash, not the furniture. Yes, you have to talk about furniture, but think about cash. For purchase of furniture, purchase of land, purchase of investment. But while purchasing the investment or fixed asset, you have to pay the cash. So paying cash means cash goes out. Cash goes out means cash outflow.
Cash outflow means deducted. You have to deduct because cash has decreased from your account, no, from your cash balance, no. Therefore, it is deducted. Very simple rule. Very simple. To only two rules. If cash comes in, add. If cash goes out, less. Okay. Now, on investment, we get dividend or interest. Now, because it is investing activity, understood. It is investing activity, the one which I have highlighted on the screen. Because it is investing activity, somewhere you have invested, you will get the returns. Dividend, interest, something you will get. So I get dividend, I get interest. So I am getting cash. There is a cash inflow. Tell me, what do I need to do? Add or less? Add. Very Add. good. That is Add. what I have written in English. See, on investment, we get dividend or interest, which is inflow of cash. So it is to be added. Okay. Now, loan. When you give loan, given is very important. Given and taken, two types of loans are there. Given and taken. Taken will come here in financing if you see. Loan taken is a financing activity. And loan given is an investing activity. You are investing somewhere. In the future, you will get back the loan together with the amount of interest. So that's what I said. No interest. If you are getting interest, add it. But if you are giving loan to somebody, cash goes out. As of now, cash goes out. No. Look at the present moment. If you are giving me the loan, so from your account, cash goes out, no? Yes or no? Yes, ma'am. ma'am. Cash goes out means added or deducted. Less. Deducted. That's what I have written. See, loan given is a type of investment, but there is a cash outflow. Don't misunderstand. Because it is investment, I'm going to get it back in the future. I know you are going to get it back in the future, but you are going to get it in the future, not today. You have to think about today. What happened with cash today? Cash goes out today, deducted. Cash comes in today, added. Okay. So you will get net cash generated or used from investing activity, as we have got net cash generated or used from operating activity. Suppose the answer comes in plus, positive. So you will write net cash generated from investing activity. And suppose you have got the answer in negative. So you will write net cash used from investing activity. Is the point clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, very good. So now come to the next point, cash from financing activity. Financing. Now, just now I told you about the management accounting. You have done vertical balance sheet in that? Vertical balance sheet. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In that vertical balance sheet, first part, proprietors and borrowed funds. Do you remember? Sources of Yes, ma'am. funds. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Sources of funds. Sources Yes, of funds. ma'am. The sources of funds means financing activity. Simple. Very, very, very simple. Where it is sources of funds. It is directly related to financing activity. Now, what do we have in sources of funds? Two things. Ma'am, equity share, No. preference share. Yes, I have that. But two things, which two things? Proprietor and borrowed funds. In Borrowed funds. proprietor, we have equity shares, preference shares, Yes, ma'am. reserves. Okay. And in borrowed funds, we have debentures, bonds, bank loan. Remember? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, very good, very good. So now, suppose company issues. Now, you will not say purchase and sale. You will not use the word purchase and sale. Let me tell you, this is financing activity, dear. So you have to use the word finance. Words related to finance are issue and redemption, not purchase and sale. Issue means sell. Company is issuing shares. I am going to purchase. Public will purchase the shares and become shareholders. So company issues the shares, no? Yes or no? Company issues the shares in the market to the public. So Yes, company ma'am. issue means company wants to sell the shares, debentures, Yes, bonds. ma'am.
Okay, issue means company is ready to sell the shares, and redemption means company is ready to pay you back and purchase back the shares. Redemption means repayment. When I'm going to repay you, I'm going to repurchase the shares, purchase back the shares. वापस लेना, आपसे shares वापस लेना, तो मुझे आपको रीपे करना पड़ेगा ना. आपने जो मेरे पास फंड्स लगाए थे मेरी कंपनी में, वो मुझे आपको सूद समेत, डिविडेंड और इंटरेस्ट के समेत वापस करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन फाइनेंस के लैंग्वेज में. फाइनेंस के टर्म में इशू मतलब सेल, रिडम्पशन मतलब बाय बैक, बाय परचेस बैक. Ma'am, buyback of share na means. Yes, that's what I wanted to tell you. Buyback of shares, the one which you have done in FA2, Financial Accounting Yes, 2, ma'am. semester 2. So Yes, in ma'am. that process, you had to redeem the shares, no? Buy back and repay the shareholders. Yes, remember everything? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Very good, yes, Shubham. ma'am. Very good. Very good, Shubham. Okay, let's go further now. Financing activity again have two rules. If there is cash inflow, add it. If there is cash outflow, less, deduct it. Simple, very simple rule. So now you have to think. You have to think. See, issue of shares, debentures, bonds, etc. इन सबको मुझे क्या करना है? ऐड. क्यों? क्यों? इशू करने से पैसे आते हैं क्या? हाँ, अगर मेरी कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो लोगों ने शेयर्स खरीदे. जब लोग शेयर खरीदते हैं तो कंपनी को क्या देते हैं? Cash. कैश. Yes. फाइनेंस है ना, कैपिटल. एंड देयरफॉर दे बिकम शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर. तो वो कंपनी के पास कैश आती है. कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो कैश आती है. कैश आई तो ऐड करने का, गई तो लेस करने का. अब जाएगी कब? जाएगी कब? जब रिडम्पशन करेंगी. Ma'am. Yes, ma'am. जब कंपनी रिडम्पशन करेगी. वेरी गुड. So deduct all the redemption of shares, debenture, bonds as it is, as मतलब because it is outflow of cash. Is it very clear? The 2 points are clear. Yes, ma'am. Shall we Yes, go to ma'am. third and fourth point? Yes, ma'am. सेम हाँ. ऊपर देखो आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखो. जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है. मिल रहा है तो हमने ऐड किया. अब नीचे फाइनेंस में आ जाओ. अब मुझे लोगों को इंटरेस्ट और डिविडेंड देना पड़ेगा. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिबेंचर होल्डर्स को मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट. शेयर होल्डर्स को मुझे क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड. देना पड़ेगा, देना. अभी देना पड़ेगा तो मेरे यहाँ से कैश आएगी कि जाएगी? जाएगी मैम. जाएगी मतलब जाएगा, ma'am. आउटफ्लो. आउटफ्लो मतलब डिडक्ट. यहाँ ऊपर हमने ऐड क्यों किया था इंटरेस्ट और डिविडेंड को? क्योंकि ये मिल रहा था. अभी मिल रहा यहीं पे ही इंटरेस्ट और डिविडेंड को मैं लेस कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि Ma'am, हम जा रहा है ना दे रहे cash. हैं, मैम. क्योंकि ये हम पे outflow हो कर रहा है रहे वो. हैं. वेरी गुड. आउटफ्लो हो रहा है. वेरी गुड. अच्छा, नेक्स्ट. लोन टेकन इज अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अभी ये क्या था? लोन गिवन इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अभी यहाँ पे लोन टेकन इज अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अभी आप लोन ले रहे हो मतलब बोरोड फंड्स. बोरोड फंड्स मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो सोर्सेस ऑफ फंड्स होता है. अच्छा, तो लोन लिया. लोन लिया तो पैसा आज के डेट में देखो, आज के डेट में लोन लेने से पैसा आया कि गया? आया. आया. आया मतलब ऐड करना है कि लेस करना है? ऐड करना है, मैम. हाँ, वेरी गुड. वेरी गुड. ऐड करना है. हो गया. आपको लास्ट में मिलेगा नेट कैश. प्लस में आएगा तो जनरेटेड, माइनस में आएगा तो यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब देखो, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग. आपको आउटर कॉलम में 3 अमाउंट्स दिख रहे हैं क्या? ये वाला ऑपरेटिंग Yes, का, ma'am. ये Yes, वाला ma'am. फाइनेंसिंग का, और ये वाला फाइनेंसिंग का. दिख रहा है तीनों आउटर कॉलम में अमाउंट्स? 3 अमाउंट्स दिख रहे हैं. Yes, ma'am. यस, मैम. तीनों को आप प्लस करोगे. प्लस तो क्या पता अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है. अगर पॉजिटिव आएगा तो आप लिखोगे नेट इंक्रीज इन कैश. सॉरी, नेट इंक्रीज इन कैश. क्या लिखोगे? बोलो. पॉजिटिव में आएगा तो नेट इंक्रीज इन cash. 1 1 + 2 + 3 मतलब ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग.
तो आपको मिलेगा नेट इंक्रीज इन कैश। अगर नेगेटिव आंसर आया तो नेट Net डिक्रीज इन कैश। decrease in cash. वेरी गुड, नेट डिक्रीज इन कैश। अब इसको आउटर कॉलम में संभाल के रखना है। अब उसमें क्या करना है, कैश मतलब मुझे कैश पता लग गई, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मेरे हाथ में पता लग गया, मतलब मेरे हाथ में ज्यादा कैश है कि ज्यादा कैश खर्चा हो गया है वो पता लग जाएगा, आउटर कॉलम में दिख रहा है मुझे। अब ये जो बची हुई कैश है इसमें मुझे ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है। मैम ये ओपनिंग कैश बैलेंस किधर से आएगा, बैलेंस शीट, Balance sheet. बैलेंस शीट में से आएगा ना, 2 इयर्स का बैलेंस शीट होगा। याद रखो कैश फ्लो मतलब 2 इयर्स का बैलेंस शीट मिला हुआ रहेगा कंपलसरी। तो जो फर्स्ट ईयर होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा, जो लास्ट ईयर होगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, कॉमन सेंस। अब जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना उसमें 4 चीजें होती है, 4, कैश बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना वो कैश मतलब कैश के जैसे ही वो ट्रीट होती है। अभी 3 महीने में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 3-4 महीने की इन्वेस्टमेंट, जो 3-4 महीने में बेचकर मुझे कैश मिल जाएगी, जो मुझे 5 साल रुकने की जरूरत नहीं है, 4 साल रुकने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लेस देन 1 ईयर। तो वो कैश बैलेंस में ही काउंट होता है। ओके, और आपको पता होना चाहिए कैश बैलेंस मतलब पॉजिटिव होता है, एसिड साइड होता है तो उसको हम प्लस में लिखते हैं। बैंक बैलेंस भी एसिड साइड होता है उसको भी हम प्लस में लिखते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी एसिड साइड दिया होता है इसीलिए हम उसको भी प्लस में लिखते हैं। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट कौन से साइड में दिया होता है, मैम Liability side. लायबिलिटी, इसीलिए मैंने उसको ब्रैकेट में डाला है। आप देखिए अच्छे से देखिए, ब्रैकेट में डाला है मैंने। यस मैम। Yes, ma'am. अभी Yes, इन ma'am. चारों को मैं प्लस माइनस करके आउटर कॉलम में लेके आऊंगी और उसको नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश के साथ सेटल करेंगे, मतलब प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. हो गया आपका फॉर्मेट फिनिश। आपने अगर आज जो मैंने आपको लॉजिक सिखाए अगर वो आपको लॉजिक समझ में आए तो मतलब आपका पूरा चैप्टर आपके हाथ में। वेरी सिंपल, यू विल फील very interesting and very easy while solving the questions. Practical questions आएंगे इसके FRA में, so you have to be very careful. फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है, कल तक ये मुझे पूरा फॉर्मेट याद करके चाहिए। इसको बोलते हैं मेन फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेन फॉर्मेट में क्या होता है देखो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, तीनों को ऐड करो तो मिलेगा नेट कैश इंक्रीज और नेट कैश डिक्रीज। उसमें ऐड करो ओपनिंग कैश बैलेंस तो आंसर मिल जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। इज इट नाउ क्लियर एवरीवन? यस मैम। तो कल मैं आपसे फॉर्मेट पूछने वाली हूँ, ये मेन फॉर्मेट है और ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के फॉर्मेट में नेट प्रॉफिट से शुरू करना है, उसमें 2 चीजों को